Hello guys, so welcome back to another video. Let's look into the chart of gold and we are starting with the monthly time frame first. So on monthly time frame जो हम एक दो लास्ट वीडियो से we were talking कि this could be a good potential retracement only and the overall trend is still bearish. So अब क्या हो रहा है कि ना gold is trying to reverse like for the selling side जो हम बात कर रहे थे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग के कुछ एक दो हफ्ता गोल्ड विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वी कैन सी अ बेरिश कैंडल क्लोजिंग ओनली. सो मंथली टाइम फ्रेम पर अब क्या है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वी विल सी दिस कैंडल इन रेड ओनली and for that it needs to trade below 3940 3950 zone. सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम अब गोल्ड अगर 3950 3940 के नीचे सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू मूव टूवर्ड्स लोअर टारगेट्स विच इज़ एट 3950 3950 3850 3800 and then 37 and lower levels can also be seen. It can reach till this area as well. That is very much possible on the monthly time frame. Only bullish confirmation on the monthly time frame if we see it trading above 4500 4550 zone, then only we can say ki trend is reversing, trend has reversed altogether, but current trend is still bearish on the monthly time frame. Let's look into the weekly chart. अब वीकली चार्ट पर भी ना गोल्ड ने क्या किया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया ना, जो इसका ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से इसने सपोर्ट क्रिएट किया है अपना, इसने हमें एक पोटेंशियल दिखाया कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक, जहाँ पर इस वीक मार्केट ने हमें एक बुलिश एनगल्फिंग दी थी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, और ये एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में भी ट्रेड हो रहा था कुछ इस तरीके से, हायर हाई हायर लोस इस तरीके से. बट लास्ट वीक हमें जो वीकली टाइम फ्रेम पर मिला ना, इस हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर का भी हमें ब्रेक डाउन मिल चुका है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेरिश साइन की अब पॉसिबिलिटी ये है कि एनी मोमेंट इट ट्रेड्स बिलो 3960 3950 3940 वी कैन से कि अब ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स कर चुके फॉर सेलिंग ओनली, एंड देन वी कैन सी लोअर लेवल्स एट 3950 3800 3850 and then lower levels can be seen. Now if we look at the daily time frame, डेली टाइम फ्रेम पर ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई विल सी कि हाउ द मार्केट विल रिएक्ट ऑन मंडे, बिकॉज यहाँ से इफ आई सी देयर इज अ ट्रेंड लाइन कमिंग ओवरऑल, we have already got the candlestick pattern as well, which is an evening star, and this is a retracement only. So daily time frame पर अब दो सिनेरियोज क्या हैं कि any point of time if we see it trading below this area which is at 3960 3950 and 3940, these three levels, then we can expect it to move all the way towards 3900 3850 and then 3800, and then lower levels can be seen very easily. So I'll see how market behaves on Monday, because अभी अगर मैं currently इस स्ट्रक्चर को देखूं तो it is bearish only. But if on the daily time frame if we see it trading above this level which is at 4050 4060 levels, which was previously a very good support as well, now the market is trading below that support level as well, but if we see it now trading above 4050 4060 area, then we can see it to move towards 4080 4100 levels, and then 41 40 4150, and then again 4200 4220 will be the deciding factor. But for that to happen it has to trade above 4050 4060. Till the time it's not like trading above or coming out of this trend line, the market will gonna be bearish only. So this is on the daily time frame. Now let's look into the 4-hour time frame.
अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्या है ना, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ने हमें एक अच्छा 4 आवर पर एक सपोर्ट शो करा है, बट मार्केट इज करंटली स्टैंडिंग एट अ रेजिस्टेंस एज वेल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि मंडे को मार्केट का मूव किस तरफ देखने को मिलेगा. फर्स्टली यहाँ पर भी इधर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है सिमिलरली. अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के टॉप की बात करूँ, दैट इज़ दिस एरिया ओनली. सो 4050 4060 जब तक नहीं ब्रीच करती है मार्केट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट कैन स्टिल रिवर्स. एंड सिमिलरली जब तक मार्केट 3960 3950 ऑन द 4 आवर चार्ट नहीं ब्रेक करती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट विल कीप टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल. सो ये जो 400 पिप्स का एरिया है हमारा, ये काफ़ी डिसाइड करेगा कि मार्केट का गोल्ड का पर्टिकुलरली नेक्स्ट मूव क्या होगा. एंड वो हमें मंडे को ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है. बिकॉज मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट तो लिया है, बट करंटली मार्केट इज स्टिल इन द लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करे एंड देन अगेन हमें एक लोअर लो देखने को मिले जो 3950 3960 को ब्रीच करे. नाउ लेट्स लुक इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम. अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या है ना, मार्केट अगेन वही सिमिलर ऑब्जर्वेशन है 1 आवर और 4 आवर पे कि इफ़ इट हैज़ टू ट्रेड बुलिश. सो नाउ इफ़ यू सी इट ट्रेडिंग अबव 4025 levels ना, you can expect it to move towards 4040 and then 4050-60. So 4050-60 तक आप if you see it trading above 4020-25, you can take a buy and expect it to move towards 4040 4050-60 area. Then we will see how price reacts at that level. अगर if that is taken, then you can expect it to move towards 4080 and then 4100 levels. If 4100 is taken, then 4140 4150 and then 4200 will come into picture. So this is on the 1 hour chart. And similarly for selling, now if you see it trading below 3990 only, you can take a sell and expect it to move towards 3980 3970 and then 3960 again. And we'll see how will price react at these levels like 3950 3960. If these levels are taken, then definitely more bearishness will come. Now let's look at the 15 minutes time frame. A 15 minutes time frame पर भी ना currently we have already got choch for the buy side. That is one thing we have got on the 15 minutes time frame. So 15 पर भी similar है. If you see it trading above this area which is at 4024 4025 levels, you can take a buy for 200 300 pips and we'll see how price react at 4050 and 4060 levels. If that is taken, you can keep your position for 4080 and 4100 levels. And similarly, if these levels are taken, which is at again 3990 to 3990, you can take a sell and expect it to move towards 3980 3970 and then 3960. Then we'll see market किस direction में move कर रही है. So it is very important for us to see how the market how the gold price opens and how it is behaving on Monday only. So we will see कि किस तरीके से move करता है. Till the time it is not breaching this area, there's a possibility ये यहाँ पर हमें range भी एक करके दिखा सकता है कि consolidation में रहे and it can bounce back as well. So it is very important for gold to trade below 3960 3950 area if you want to see 3850 3800 levels or even lower levels. It can reach to 3500 levels as well. So take your positions accordingly and see how price behaves on Monday. After that only take any of the positions, guys, and I'll see you in the next video.